Good evening to all. Sir, very good evening. Good evening, sir. An enterprise in rural areas. Enterprise in rural areas. So Delhi, hello. Niranjan Sahu, hello. Sir, again, sir. Delhi entrepreneur ऊपर सुनी सुनी विरक्त लागिबनी बोधे. नहीं sir, नहीं, सेंती नहीं sir. ठीक है. Mr. Coordinator Dr. Sahu handed over to me. Again. He has been alerted to take the class, but whereas he is in busy schedule, so that he handed over to me. I am also in busy schedule. But Okay. I am continuing, though I am in a busy schedule program. Okay. So, planning a rural enterprise. Rural area re jete amar enterprise achi, medium scale, small scale, like cottage, village and handicraft, sericulture and aquaculture. As planning is inevitable, अनिर्वाज्य प्रत्येक डेवलपमेंटल वर्क रे से सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो प्लानिंग इज इनएविटेबल अनिर्वाज्य प्लानिंग हेले we can able to attain the goal. So planning is very essential for all the organizations. So planning is the foremost functions in decision making to set up a rural enterprise, as one has to plan all the activities well in advance and evaluate the pros, advantages and disadvantages in the light of optimum resources utilization with minimize the costs and the time. So that planning involves as drawing of the objectives and providing for a framework to accomplish these objectives. Project planning aims at formulation of all the future projects activities as well as in advance. Hence, if we want to establish one project on small enterprise or medium scale enterprise or large scale enterprise, should first try to implement the plan and forecast for future achieve. How to achieve the goal during future. So SWOT analysis, project identification करा जाए. Project identification आमे को type रो project करिबा ताको गोटे SWOT analysis थाए. प्रत्येक planning रे गोटे SWOT analysis ताको SWOT. SWOT S means strength. So W means weakness and O means opportunities and the threats in respect T means threats in respect of available resources. So how much resources are available? So the organization must focus on the SWOT analysis. So organization, organization consists of the 5M: man, money, machinery, material and management. So these are the 5PM as included. If we want to form one or frame one organization, we should focus on the 5PM. And each organization having one leader, and the leader always possesses that back supports of the members. There are followers of the leaders. Each leaders, there must be followers. If there will be no followers for the leaders, we cannot rate as he is a good leader. Hence, in this context, institutional support, project identification, जेतबेले आमे करि सरिबा SWOT analysis माध्यमरे, so that we should what are the focus on the point, what are the institutions that support for our projects. So like there are many institution agencies such as Entrepreneurship Development Institute, EDI Center, Small Industries Service Institute, SISI, Technical Consultancy Organization, State level and district level industry center, DIC जोगुड़ा सब अच्छी, private consultancy organization usually located at the district headquarter or in a nearby town, to provide the effective counseling services in planning and enterprise and
for this subsequent activities also. So there are numbers of institutions, and there are triple options are there: manufacturing unit, trading unit, and like service enterprise. So industry and service enterprise consists, there are numbers of industry sectors. We can cite some of the examples in industrial sectors: chemical, pharmaceutical, metal industries, metal products, machinery, and other electrical machinery, electronics, transport equipments, and like textile, rubber, plastic, food, mineral-based industries, ceramics, etc., paper, agro-based industries, glass. So these are the different types of industry are there. The government classified in this context. So service enterprise like the tailoring, newspaper, travel agency, and tuition class, and the security, and all these are the service enterprise included in our organizations. So for information accessibility, कौन सब हमार information accessibility दरकार? We need various type of information about several aspects such as opportunities, market, technology, finance, policy, location. ये सब हमारा विभिन्न प्रकार accessibility information दरकार पड़ी था. So different sources of information. ताले जो finance, policy, technology, market ऊपरे common सब information उड़ा project install वा project establishment करिबा पे हेले common सब information हमें कोठरो हमें पाई परिबा. Similar enterprise owners जो हमें एस्टाब्लिश करिया पे जाउचंती सेही टाइप रो अन्य कुआडा अछि तांको ठारू कि हमें मध्य information we can collect to establish and provide the information to our own projects. So secondly, raw material suppliers जो मान supply करचंती raw material तांको ठारू मध्य कोठी सस्ता रे cheaply available हे परिबो raw materials, where there is labor cheaply will avail, and machinery suppliers, packing material suppliers, customers, dealers, consultants, employees, bank official, promotional agency, association of similar products. So emananga prati jodi ame contact rakhiba tale ame we can collect the information that will help to us for our accessibility to establish one small scale or medium scale enterprise. Information on business idea, could supaiba feasibility of the studies, project profiles, industry studies, area development studies. So information on business ideas. For example, बहुत गुडे एग्जांपल एथरे अछि ई यूनिट रे. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर प्रति जिल्ला रे गोटे नखा डीआईसी अछि हम जानि छन. सो प्रति जिल्ला रे वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर सेटु हमें बहुत प्रकार एक्सेसिबिलिटी पाई परिबा. सो टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, लीड बैंक. प्रति जिल्ला रे जानि थिबे तमन सब जानि थिबो जे प्रति जिल्ला रे गोटे लखा लीड बैंक थाए. लीड बैंक र भूमिका बहुत प्रकार रोल थाए पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट पाई. फॉर एग्जांपल केंद्र डिस्ट्रिक्ट पाई होची बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक. कटक ग्रामीण बैंक हमर कटक रे होची फेमस जे जो माने की प्रोवाइड sufficient and there are large numbers of banking facilities from urban to remote area. लीड बैंक जो डिस्ट्रिक्ट थाए तांकर संख्या होचे अधिक एवं सेमाने विभिन्न प्रकार फाइनेंस विभिन्न सेक्टर को जोगे दै थांती एवं अनएम्प्लॉयड यूथ मान को मध्य जोगे थांती. तो लीड बैंक र भूमिका गोटे जिल्ला रे बहुत थाए. सो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो, नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NIDC established at New Delhi. Khadi and Village Industry Commission KVIC, Commission of Cottage Industries, Entrepreneurship Development Institute of India EDI. So National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development. एई भली सब बहुत प्रकार सब अछि. Information on business ideas we can collect. So there are also sector specific agencies to provide the said information.
फॉर एग्जांपल एजेंसी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेस इंडस्ट्री फल एवं वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो गुड़ाक अच्छी सेठू आम कौट पाइबा को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री न्यू दिल्ली सेठू आम पाई परिबा इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स सेठू मध्य आम पाई परिबा इंफॉर्मेशन सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर आईआईटी खड़गपुर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड न्यू दिल्ली सो ये सब आम विभिन्न प्रकार इंफॉर्मेशन आम पाई परिबा हमर बिजनेस आइडिया को ग्रो करि परिबा सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट द सोर्सेस इंफॉर्मेशन यदि आम चाहिबा बाहर को एक्सपोर्ट करि परिबा एवं टूल्स आम इंपोर्ट करि परिबा फ्रॉम व्हिच एरिया वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन सो रिलेवेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली ट्रेड ऑफिसेस concern countries in India इंडियन ट्रेड ऑफिस इन ए रिलेवेंट फॉरेन कंट्री सो ये सब आम विभिन्न प्रकार जदि बाहर राष्ट्र सहित जदि व्यवसाय वाणिज्य बा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करबा ताले सब आम विभिन्न प्रकार संवाद बा इंफॉर्मेशन आम कलेक्शन करि परिबा सो कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी अच्छी लैंड कॉस्ट एंड डेवलपमेंट चार्जेस देयर आर definite norms and guidelines for obtaining loans from these financial institutions state financial corporation achi state industrial development corporation achi SIDC state industrial development corporation commercial bank are the prime sources of meeting the project costs eman sabu project pai finance support kari thandi so land cost and development charges construction of a building purchase of a plant machinery procuring of miscellaneous fixed asset margin of working capital contingency so ये पाई सब आमे विभिन्न प्रकार बैंक रो आमे फाइनेंस कलेक्शन करि परिबा so support system in short term it is the information which helps in sound decision making what a support system achi that is in the information could be on infrastructure facilities incentive available financial tie-off availability of raw materials tax concession एगुड़ी सब support system information on various infrastructure facilities such as availability of land power water facilities for effluent or waste disposal should be available from the district industrial center of the district or from the state directorate of industries एठु सब आमे support system हासिल करि परिबा सो इस विभिन्न प्रकार गोटे एस्टाब्लिश करबा हेले गोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमको विभिन्न प्रकार आइडिया नवा पड़िबो विभिन्न दिगो को ध्यान देबा पे पड़िथा तापर मार्केट असेसमेंट से बड़ी कोड कलेक्शन करबा प्रोजेक्ट केमते इंस्टॉल करबा एवं मार्केट असेसमेंट से बड़ा एनालिसिस ऑफ द मार्केट डिमांड एटा होची इनोवेटिव थॉट एगडा सब हम जोटा जे सुम्पेटर कहितले जे जने एंटरप्रेन्योर रो गोटे बिग इनोवेटिव थॉट थिबा दरकार नूतनत्व आइडिया थिबा दरकार if you wants to establish one of the small scale industry so market assessment आडू को मध्य फोकस करबा पड़िबो एनालिसिस ऑफ मार्केट डिमांड कंपटीशन कोठी अछि एवं ट्रेड प्रैक्टिसेस कोन आमे करि परिबा सो मार्केट डिमांड कंपटीशन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस आ तापर आमे डाटा सब कलेक्शन करबा आमे को प्रोडक्ट करूचंती बा हम फार्म रे आम प्रोजेक्ट रे कोन आमे प्रोडक्शन करूचंती एवं आहार आ पई आमे डाटा सब कलेक्शन करबा को अंचल रे आर हेवी डिमांड अछि एवं को जगह आमे एस्टैब्लिश करबा वेयर चीपली रॉ मटेरियल्स लेबर will available and good transport facility must be available so that then we proceed to collect the data on annual report of companies trade publication and records library and trade information centers directories of manufacturers newspaper business magazine government publication data agency consultancy firm information from dealers various agents so से बड़े मार्केट रिसर्च करबा
रिसर्च डिजाइन करवा, फील्ड वर्क करवा, डाटा एनालिसिस करवा, प्रॉब्लम डेफिनेशन करवा, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करवा, एगुड़ा सब होची मार्केट असेसमेंट रे जाउची। तापर मार्केट feasibility of a report. It is very essential to prepare a feasibility report covering all the activities and the resources needed for the project. The feasibility report broadly contains some of the important items: the background of the entrepreneur, educational background, family background, professional exposure, market potential and marketing strategy, selection of location of the project, requirements of land and building, requirements of plant and machinery, manufacturing process, requirement of utilities, estimated cost of the project, means of finance, even cost of production, break-even point analysis. So break-even point also one of the important aspect in the production sectors. Break-even point is one of the important concept of producer. Cash flow statement, cash flow, the cash flow overflow or inflow or outflow. Cash outflow basi na inflow basi. So that is one concept also that is analyzed in cost concept. Internal rate of return IRR jota kahandi, economic viability. So contents of the project also kon rahuchi, that is executive summary, project background, market of plant, material and inputs, location and site of the plant, plant organization, manpower, labor, project implementation, एगुड़ी को सब रहुची contents of the project रे रहिवा दरकार, project गोटा report पाई. So next होची brief explanation about contents, project background of and history, market and plant, materials and inputs, location and site, project engineering, plant organization, manpower, implementation schedule, financial economic evaluation, ये सब होची प्रोजेक्ट कंटेंट्स रे रहइबो. पूरा प्रोजेक्ट हम करबा पय हेले विभिन्न प्रकार कंटेंट्स, मार्केट एनालिसिस एगडो ऊपर सब हमको ध्यान देबा में पड़ी था. लेजिस्लेशन प्रोसीजर मध्य अछि प्रोजेक्ट रो. As a small scale unit, it should be registered with the district industrial center. छोटो छोटो इंडस्ट्री गुडी स्कैटर्ड है कि जो गुडी सृष्टि होची ताको डीआईसी रे हमको रजिस्ट्रेशन करबा पड़िबो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच द प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बी लोकेटेड. द डीआईसी shall guide for necessary registration elsewhere such as small scale industries registration and registration with other agencies. It has to obtain no objection certificate from the state pollution control board. जे कोनसी इंडस्ट्री हम स्थापन करबा निश्चित भाव रे pollution control board रो हमें परमिशन नबा पय पड़िबो. सपोज गोटे गां अंचल रे हमें गोटे छोटो हलर पकेबा बा गोटे काजू फैक्ट्री करबा और काजू प्लांट करबा, काजू नट फैक्ट्री करबा, सेठी निश्चित चिमिन लागिबो, धुआं उठिबो, स्कूल कॉलेज थिबो सेठी ऑब्जेक्शन आसीबो गांगंडा अंचल रे. तेणु हमको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नवा पड़िबो. किंतु मु देखिछि अनेक जगह रे स्कूल थिबो, से पाखरे कॉलेज मध्य थिबो, गांगंडा अंचल रे भी इवन आजकल तो ग्राम पंचायत मान सब कॉलेज प्लस 2 सब हो गलानी. तबे स्कूल अछि वेराज कासुनट प्लांट भी अछि. मु देखिछि केते गटा जगह रे. ता माने कोन? दैट इज करप्शन, इंडिकेशन ऑफ द करप्शन. पैसा दे देले सरकारी कळ को जे तमे चलाओ प्लांट देखा जीवो, ऑब्जेक्शन पडुथाउ नो प्रॉब्लम. मुने जे देखिछि केतेटा जगह रे ए पाखर स्कूल अछि वेराज माने कोन नॉइज पोल्यूशन होउची, तापरे सीएफसी कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिलीज होउची, से स्कूल एरिया मान करे एडा सब स्प्रेड होउची ना, जहाले भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन होउची, डिस्टर्बेंस होउची, तथापि परमिशन सरकार दउची. हम पाठ को हम पाठ दिया जाउची, जा पढिया में पढियो बाध्य. सो
Depending upon the nature of the product or service, it has to be registered for sales tax, service tax and other statutory purpose. Jete statutory purpose अछि सब गुडा हम फुलफिल करिबा में पड़िबो. So legal aspect of a business रे Factory Act होछि 1948 फर्स्ट फैक्टरी एक्ट हमर हितला इंडिया रे. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सोशल लेजिस्लेशन वेज लेजिस्लेशन सेही गुडा को फोकसिंग करिकरी आम देश रे फैक्टरी एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेबर एक्ट वेज एक्ट एवं एम्प्लॉयमेंट एक्ट सब गुडा को ताकू बेस करिकरी हमर वर्तमान चालू रही आम देश रे. वेज लेजिस्लेशन एक्ट रे से बड़ी अछि कोन पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 बहुत पुराना रू सेगडा सब फॉलो करा जाए. पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट पेमेंट ऑफ बोनस मिनिमम वेज एक्ट एगडा सब हमर सेही मसिया थारु सेबे जस्ट मझरे ताकू टिके अमेंडमेंट खाली परिवर्तन करा जाय कि चेंज अप करा जाउछि. सो ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट यूनिट रे अछि ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संबल एवं आमर अन्यान्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Here India is endowed with vast human resources. We know dense population only prevails in India. That's why in the world. That's why India treated as the best market for every product. प्रत्येक प्रोडक्ट पाई जहाँ आसीबो भारत को प्रत्येक प्रोडक्ट रा डिमांड हेवी डिमांड अछि. सो चाइना जते फॉरेन प्रोडक्ट देखो से माने फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन they have been thought that India is the best market. What we produce that will be demanded by the consumer. So if there will be heavy demand on the product or sales maximization will happen, so that profit maximization will automatically held possible. The entrepreneur will earn maximum profit, which need to be developed and exploited for realizing the nation's goals and objectives. Among Indian population, about 40% of youth, those who are living in rural areas, majority of them live in rural areas. In order to make this vibrant and strong human resources, nation's greatest wealth, young men and women from very nook and corner of our country need to be educated and trained and empowered to become active participant in our efforts on socio-economic development. Necessary infrastructure and basic facilities are needed to make enterprise development possible in the rural areas. So, youth, young men and women, about 40% living in the rural areas, they can change the rural economy if they will establish the small scale sector in the rural areas, so that economic conditions of the rural area will automatically revive because they will earn more and more income. Per capita income of the family members will increase automatically, and rural waste raw material that available can utilize properly. Human resources for developing rural enterprises. As human resources amongst most essential resources that are required for fostering rural entrepreneurship, the importance of human resources cannot be overemphasized, for it is these resources alone that makes the greatest impact on socio and economic development of the rural areas. So several research studies have reiterated the fact that it is the entrepreneur spirit and achievement orientation that plays an important role in the enterprise development. Hence, entrepreneurship is primarily an individual trait. Entrepreneurial spirit includes a set of behavioral aspects, including achievement of motivation, attitude, skills, analytical capacity, judgment, and decision-making ability. These aspects can be nurtured and cultivated by motivational and management training.
एई गुडी को पर हमको फोकस करबा पई पड़ी थाए दैट इज एटीट्यूड स्किल मोटिवेशन पावर analytical capacity judgment and decision making. So entrepreneur must possess all these qualities by which the bold step and risky responsibility can be borne by the entrepreneur automatically. If he possesses motivation power and good attitude, skills means good attitude means positive attitude. Must entrepreneur focus on the positive attitude. Skills, analytical capacity, judgment, what is good and what is bad. The good judgment must be undertaken by the entrepreneur. So training of entrepreneurship and development. आम देश में बहुत प्रकार सब ट्रेनिंग अच्छी एंटरप्रेन्योर मानक एवं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर थ्रू सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नेमली EDP entrepreneurship development programs has emerged as an important strategy for development of human resources for promoting small business enterprise in rural areas. In India has come a long way since the idea of creating entrepreneurs through training was first mooted about 40 years ago. 40-50 वर्ष आगु मध्य entrepreneur activity grow kariya pai desare madhya training diya hai kya in the early 60s the first ever India where in developing entrepreneurship through training and motivation was tried at the National Institute of Small Industry Extension and Training is now famous Kakinada experiment. Since then there has been keen interest in developing new entrepreneur as the key approach to socio-economic development. So that Kakinada experiment, so well documented by Mark Cleland and Winter. So Kakinada experiment जोटा अच्छी आमर National Institute of Small Industry and Extension and Training is now famous Kakinada experiment तक हुआ जाऊँची जे बहुल परिमाण रे डिफरेंट एस्पेक्ट ऊपर मोटिवेशनल टेक्निक वाज गिवन टू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज सो अपार्ट फ्रॉम दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर बीइंग रन इन ईच स्टेट प्रत्येक राज्य रे मध्य एंटरप्रेन्योरल सेंटर ट्रेनिंग सेंटर मध्य सब अछि एंड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट मध्य अछि EDII NISIET IIED ICECD have designed several training courses for training potential entrepreneurs on various aspects enterprise development. And in addition to research institute, agricultural universities, and like Krishi Vigyan Kendra KVIC, जोटा कुआ जाउची, Krishi Vigyan Kendra have provided adequate training opportunity on the subject matter of technology for enterprise development. PMROI scheme madhya PMROI Prime Minister Rojagar Yojana madhya training scheme diya jauchi by different banks and the financial assistance is provided by NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD is provided sufficient financial assistance to Bank of India through training program is provided by amara hochi जिला परिषद बाय DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जोटा अछि DRDA माध्यम रे विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग फैसिलिटी दिया जाउछि एंटरप्रेन्योर मानकु सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अछि जानिछ ट्राइजिम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ट्राइजिम प्रोग्राम अछि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना अछि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना रे केते आगे दिया जाउथला यंग एजुकेटेड यंग पिला माननकु मैट्रिक क्वालिफिकेशन थिबो 1 लाख लखा दिया जाउथला प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एबे केते अछि एग्जैक्टली म कहि पारु नै 1 लाख थिला आगे एजुकेटेड मैट्रिकुलेशन जो मान सब थे मैट्रिक एबव से मानक सब 1 लाख सरकार दउथले एवं विभिन्न प्रकार कुटीर शिल्प अन्य शिल्प संस्था स्थापन करी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हवा पाई तापर अछि हमर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY स्कीम अछि
RLEGP स्कीम अच्छी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एगुड़े सब विभिन्न प्रकार स्कीम अच्छी आम देश रे सो ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर कल्चर एंटरप्रेन्योर खाली प्रोडक्शन करी न थाए बा एम्प्लॉयमेंट देश रे जोगे न थाए स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन एंटरप्राइज केवल संभव होई न थाए या छड़ा एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर मध्य सृष्टि होई थाए संस्कृति पटचित्र सृष्टि होई थाए कारण विभिन्न प्रकार कुटीर शिल्प माध्यम रे हमर पुराना कालिया ट्रेडिशनल कल्चर एवं कस्टम्स एथरे सब लिपिबद्ध हेके मध्य रही थाए पिपिली रो चांदुआ फॉर एग्जांपल ढग ढमाली विभिन्न प्रकार ढग ढमाली एवं तारकसी कार्यक्रम रे हमर ट्रेडिशनल कल्चर गुडी को खोदित होई थाए सब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC is a government of India enterprise set up during 1955 under the Ministry of Industry. So NSIC is located in the industrial estate in Delhi. It is premier national level non-banking financial institution. Non-banking financial institution with a sound resource base and country-wide network of regional office and branches for promotion of small scale industry and small enterprises. National Small Industry Corporation Board जोटा अच्छी बहु प्रकार नेशन वाइड विभिन्न प्रकार सहायता सब जोगे देता है. NSIC has attained the prestigious status of a financial company offering under one roof a full spectrum of service ranging from hire purchase, leasing, raw material assistance, marketing and export development. विदेश राष्ट्र को मध्य एक्सपोर्ट जोड़ा हमें सरप्लस प्रोडक्शन करिबा हमें बाहर देश को सप्लाई करी करी we can earn the foreign exchange that National Small Industry Corporation motivated to the small entrepreneur also. So CAPRAT गोटे अच्छी Council for Advancement People's Action and Rural Technology ताको आजौची CAPRAT in order to encourage, promote and assist voluntary actions in rural development with focus on injecting new technology inputs for enhancement of rural prosperity. The government set up Council for Advancement of People's Action and Rural Technology. So new technology adopt करबा पई यादर सब प्रोत्साहन दिया जायता है. So एगडा सब देखिबो malpractices impending entrepreneurship growth. So what are the hurdles मध्य अच्छी entrepreneurial growth पई विभिन्न प्रकार सब hurdles अच्छी malpractice एगडा सब देखिबा में पड़िबो. Basic infrastructure for rural entrepreneurship. Infrastructure मध्य नियाति दरकार. गां गंडा रे and enterprise in rural area पई infrastructure facility होची inevitable. Infrastructure plays a significant role, an important role in providing and enabling, encouraging atmosphere for the growth and spread of rural enterprise and small industries. Transport, power and communication. First infrastructure. Transport, good communication is very important. आम देश रे वर्तमान जो देखुच ट्रांसपोर्ट सिस्टम जुआड़े देखिबो सारा भारत सारा रास्ता घाट कंस्ट्रक्शन चलची ब्रिज कंस्ट्रक्शन चलीची भंगा चलीची पुणी ताकू तयारी होउची सारा भारत रे. सो वर्ल्ड हमर अछि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट शॉर्ट फॉर्म ताकू आ जाए इंटरनेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इंटरनेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट रास्ता घाट गवेषणा रिसर्च पाई गोटे इंस्टीट्यूट अच्छी से वर्ल्ड रे सारा विश्व रे जिते रास्ता घाट किभली भल रास्ता कंस्ट्रक्शन होई परिबो एक्सीडेंट न हबो सहरांचल अर्बन एरिया रे बा connect with the metropolitan cities, state wise, district wise
and up to state district transport to village panchayat पर्यंत को डिजाइन रास्ता गुडी को हवा दरकार हैं पहाड़ पर्वत जंगल अंचल रे प्लेन अंचल रे किभली रास्ता हवा दरकार सेथि पई गोटे इंटरनेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अछि पृथ्वी रो विख्यात विश्वविख्यात रिसर्च इंस्टीट्यूट अछि जापान रे सेटा अवस्थित इंटरनेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सो को अंचल पई जोटे लार्ज स्केल इंडस्ट्री अछि हेवी इंडस्ट्री अछि ता पई को भली ट्रांसपोर्ट दरकार एबे प्राय देखिथिबो सुनिथिबो ए 8 दिन तळे 5 दिन खंड तळे बिफोर 5 days हमर ओडिशा रो बडबिली अंचल रु अप टू पारादीप पर्यंत 8 लेन होउची गोटे रास्ता यस सर सड़क यस सर सुनिथिबो यस सर यस हां ता माने देखो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट why the government taken decisions to construct the road and provide the transport facilities from Badbil to Paradip through Duburi देगिरी जीवो 8 लेन हबो कारण केते आबाद हे जीवो चाष जमी इत्यादि इत्यादि केते घर द्वारा पुणी भंगा तुटगा चलियो कोन पाई there are numbers of reasons behind it because Kalinga iron steel plant is as at कोठी अछि सेटा कलिंग हमर भंजनगर सर हे सर जाजपुर रोड जोड़ा व्यासनगर जाजपुर रोड आगे टाटा हे कंपनी डुबुरी आगे डुबुरी कलिंग to facilitate the Tata company the government of India perhaps we expect Tata company approach to government of India in this context and the connection must be held possible Kalinga Tata company to Jamshedpur. If that road facility, transport facility is available, so that Tata company, the Tata Nagar, Jamshedpur, Bihar will connect with Kalinga Nagar. Because we know 10% capitalists in India controlling the Indian economy. Only 10%. 10 भाग पूंजीवादी लोक जो भारत रे अछंती आउ 90% हेले मिडिल क्लास आ लोअर मिडिल क्लास लोक माने 90% आम देश रे 10% लोक लाइक टाटा बिरला जिंदल रिलायंस एही सब ग्रुप रो जे कि सारा देश रो अर्थनीति कंट्रोल करूची this was the perhaps I expect that focusing to the point in order to connect Jamshedpur Tata to Kalinga Nagar. And there are also Jindal plant, numbers of industrialist plants also as establishing on the road, so that they perhaps applied to government of India to expand the road. So raw materials will cheaply available and the connection between Tata Jamshedpur to Kalinga Nagar will help possible. This is perhaps only key reasons why the road is expanding about 300 kilometers. Hence, transport and power communication, a well neat and coordinated system of transport plays an important role in the sustained economic growth of a country. Transport system forms the major basic infrastructure required for harnessing the potential of rural entrepreneurship. Among the transport systems, several modes, rail and road, important while ports also play a major role in some cases. So, Japan रे जो इंटरनेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अछि प्रत्येक देश पृथ्वी रो जापान नु जाई करी सिखि करी आसी थांती ट्रेनिंग नै आसन जे निज देश रे केवल रास्ता से हुई कंस्ट्रक्शन करा जिवो जेते वर्ल्ड यूएसए ब्रिटेन जापान सॉरी यूएसए ब्रिटेन जर्मन फ्रांस इटाली चाइना प्रत्येक देश ऑस्ट्रेलिया जापान नु से माने सब ट्रेनिंग नै की आसी थांती निज देश रे रास्ता कंस्ट्रक्शन पई फैसिलिटेशन करै थांती सो रेलवे अछि रोड अछि एंड लाइक other transport facilities so available
So power, generation of distribution of electricity from various sources has an important role in development of rural enterprise. Accelerated rural electrification program envisages of at providing supply of electricity for production and oriented activities in rural industries, minor irrigation, electrification of villages will help possible. So that is why in rural areas electrification is essential, inevitable for the irrigation and to produce the raw materials through from the agricultural sector. So electrification is essential, and telecommunication is also essential. Other infrastructure for supporting rural enterprise. How sub kon supporting enterprise, supporting rural entrepreneurship. Other infrastructure is also essential, like schooling, technical, vocational education. School kon darkar pade. जन एंटरप्रेन्योर हम स्कूल कौन पुणी जदि गाँ गंडार एंटरप्राइज गढ़ी उठला स्कूल कौन दरकार, टेक्निकल भोकेशनल एजुकेशन कौन दरकार, निश्चित भाव दरकार, कारण आर इंपैक्ट अच्छी, पॉजिटिव इंपैक्ट अच्छी. सो प्रोविजन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन फॉर पीपल enables them to acquire literacy, knowledge and skills for widening their opportunity for employment and income generation. Several programs and initiatives like Sarva Shiksha Abhijan, District Primary DPP Joda program, and a national program of nutrition support to primary education, popularly known as the midday meal scheme, Operation Blackboard, Lok Zombies project, Shiksha Karmi project, Mahila Samakhya, एवं सब विभिन्न प्रकार प्रोग्राम which aim at making primary education more accessible and effective. At the secondary level, several industrial training institutes, polytechnics and other basic training institutes and vocational training institutes are set up to provide technical education for youth who aspire to become technicians or technical work force, especially electrician, plumber, carpenter, mechanics, etc. यहाँ पर सब सेकेंडरी एजुकेशन लेवल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई सब जो गुड़ाक अच्छी पॉलिटेक्निक्स अच्छी एगुड़ा सब प्रोवाइड करुच्ची एगुड़ा सब ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड एजुकेशन. सो नेशनल लिटरेसी मिशन campaign attempt at providing functional literacy to non-literate youth in the age group of 15 to 35. जो मानकर बयस थाए से माने जो माने शिक्षा हासिल करना थंती नेशनल लिटरेसी मिशन मध्य ए फैसिलिटी सब जो होई था. सो रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ये मध्य एसेंशियल वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. उत्तम स्वास्थ्य रे मध्य रे मानसिक स्तर रे गोटा स्वाभाविक अवस्था संचार होई थाए. तेणु करी rural health care infrastructure is also very essential. Public health is a major area of concern today, as its proper handling helps in improving human resources in rural areas. So health mission launched recently aims at providing integrated health care, health center service to rural people and addresses the key concern of reducing infant mortality and malnutrition and improving the health care of rural women and youth. Provision of adequate health care facilities in rural areas would help develop physically and mentally sound human resources. So sound body, sound mind, automatically health possible. So that यदि sound body, sound mind थिवो ताहले मोटिवेशन पावर वृद्धि होई थाए एवं कार्य करिवार इच्छा आग्रह वृद्धि होई थाए. Desire to work, desire to willingness to work automatically grow होता है. So motivation वृद्धि होता है. We can perform the better with better efficiency to complete the work. So rural housing मध्य essential. Adequate housing with minimum basic amenities is also an essential rural infrastructure. So food, clothing, shelter, 3 नेसेसिटी आइटम. खाद्य, वस्त्र, बासगृह ना आम कौनटा कर
So comforts, luxurious, reject, ignore it. So necessity is inevitable to live in this earth, in the society. खाद्य वस्त्र बासगृह होची मनुष्यर अति जरूरी अति आवश्यक द्रव्य गुड़िक ये तीनोटी हे गले we can proceed to earn more and more and proceed to collect or enjoy the comforts and luxurious goods also. So drinking water facility madhya sei bhali essential. So schooling, technical, vocational education सहित rural health care infrastructure एवं ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज सैनिटेशन ए गुडी को सबु निहाती दरकार पड़िता. So sanitation also is necessary. Central Rural Sanitation Program was launched during 1986 with the objective of improving quality of life of rural people and also to provide privacy and dignity of women. This program provides subsidy for construction of sanitary latrines in village. The program was revised in 1992 and a later Total Sanitation Campaign TSC was launched during 1999 with a community-led people-centered approach. Hence, to add vigor to TSC, Total Sanitation Campaign implementation, Government of India has separately launched an award scheme, Nirmal Grama Puraskar. ये गोटा award scheme जदि total sanitation गोटा गोटा गाँ जदि देखई परिवे तारे सरकार भारत सरकार से गोटे award launch करिसेंती निर्मल ग्राम पुरस्कार for fully sanitized and open defecation free ग्राम पंचायत block and districts. So provision of urban amenities in rural areas पूर्वता को कहा जाए. Provision of urban amenities in rural areas पूर्वता को कहा जाए PURA. A dream project of His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam. Kalam कर ये थिला idea. Provision of urban amenities in rural areas पूर्वता को कहा जाए. Dr. Kalam कर Abadana, President of India, was launched during 2003 to bridge the rural-urban divide and achieve balanced socio-economic development. The Pura scheme aims to meet the gap in physical and social infrastructure in the identified rural cluster consisting of 10 to 15 villages around selected towns. So, Dr. APJ Abdul Kalam given a beautiful idea thought to Government of India, suggested to Government of India to bridge the gap between urban and rural differentiation. So that what is the amenities and facilities available in urban area to some extent must be covered in adjacent villages to the urban areas. यही कथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तांकर स्वप्न थिला जोटा कि अर्बन एरिया मानकर सहर अंचल बा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाखापाखि जो गाँ गड़ा एडजेसेंट विलेज गुड़िक अच्छी ताकू जदि आमे एककालीन ग्रो करि परिबा डेवलप करि परिबा अर्बन एरिया सहित सो साइमल्टेनियसली गुड इंपैक्ट विल फॉल ऑन दी एडजेसेंट विलेजेस. सेही विलेज रे मध्य चासी चाष करूची एवं रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करूची खाद्य एवं विभिन्न प्रकार फूड ग्रेन्स मध्य प्रोडक्शन करूची कृषिजात raw material madhya production karuchi. That village adjacent village will amenity automatically available like transport system, electrification, water sanitation supply, even education, health facility, everything will automatically available because that village is adjacent to the urban areas. So that impact automatically next connect to nearby village. अर्बन पाख जो विलेज धीरे धीरे डेवलप होला परे तार इंपैक्ट नियर बाय विलेज ऊपर अगेन पड़ी पड़ी के जीवो. सो साइमल्टेनियसली दैट कनेक्शन विल कंटिन्यू टू ग्रास रूट लेवल ऑटोमेटिकली पूरा रिमोट एरिया को धीरे धीरे स्प्रेड करिवो. सो अर्बन एंड विलेज इन बिटवीन देयर इज ए वेल ब्रिज. द गैप विल बी वी कैन इग्नोर.
a good bridge will prevail in between the urban and rural areas. So that the identified areas of intervention and support are electronic connectivity in the form of reliable telecom, internet and IT services. Secondly, knowledge connectivity in the form of a good educational and training institutes, market connectivity that would enable farmer to get the best price for their product output. जहाँ produce करूचंदी से माने farmer माने obviously they will get the appropriate price because the farmers, Indian farmers faces the gamble of a monsoon. से माने loser actually. भारतीय कृषक सबले लूजर रे थांती केबे हेले प्रॉफिटेबल नाही पंजाब केतरा राज्य को छाड़े देला परे पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात जो advanced state because they are utilizing the modern technology having sufficient irrigation facilities, so they are profitable farmers, and rest of the areas farmers are belongs to the they are facing the poverty. So provision of a drinking water supply, upgradation of existing health facilities. Haryali Department Land Resources launched a new initiative called Haryali with the objective of empower Panchayat Raj institutions both financially, administratively in implementing watershed development programs, drought prone area program, जोटा हमारा अच्छे DPAP, Desert Development Program, DPP, and integrated watershed development program to tackle the special problems faced by these areas and constantly affected by drought conditions. So ये बोली सब विभिन्न प्रकार हमारे सब प्रोग्राम सब अच्छी जोटा कि एक डाक सब जो दी फैसिलिटी जोगे दिया जाए परिबो so that the dream of His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam will automatically fulfill. So the gap between the urban and rural area, the gap if will reduced, so that Dr. APJ Abdul Kalam करो स्वप्न निश्चित भाव रे साकार होई परिबो. से कहउचंती सबले गां सहित एडजेसेंट विलेज ऊपर गुरुत्व दिया जाऊ. जदि अर्बन एरिया थिबा जो विलेज अछि पाखा पाखी एडजेसेंट अछि, so जदि से गुडी को इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़िबो एडजेसेंट विलेज ऊपर ऑटोमेटिकली that will connect slowly to grassroots to remote village areas. So automatically good transportation will available connect from main urban area to remote village area, and health facility will be available, and that health saita water, sanitation, electrification, electronics and IT sector development सब गुडी को जेतबे available हेजबो, the farmer will and the small producer will become so aware. The farmer as well as the small producer, the entrepreneur will become so aware. कोउठ केते डिमांड अछि, प्रोडक्ट केते हमें सब नेट रे सब इंटरनेट माध्यम से जानि परछन्ती वर्तमान जुग रे. Where there is heavy demand, where there is cheaply raw materials available, labor available, how can we supply, how can we export to foreign countries? If we will connect with the foreign countries, our market from the rural area to foreign countries, so that we can earn maximum foreign exchange. There will be heavy demand. भारतर गाँ गंडा अंचल रे जो प्रोडक्ट गुडी का होची ताकू जदि हम विदेश सहित कनेक्ट कर दबा विदेशी मार्केट सहित वर्तमान जे भली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी as available nowadays, so that we can earn sufficient foreign exchange. So I marked a full stop here in my today's council because indication came to me already for to stop the class. So Thank you, sir. Hello, Niranjana. Sir. हाँ टिके खाली आइडिया नब अभिमनु बुझी परछन नाही. आज्ञा सर. टिके मेन होची ये सब्जेक्ट ऊपर मन रखि था मु कहि दोची सब लर्नर्स मान को मेन होची पॉइंट. आज्ञा वेरी इंपोर्टेंट मन रखि था जो गुडा एगडा कहंती लॉजिकल आंसर एगडा कहंती जो गुडा डिस्क्रिप्टिव आंसर को कहा जाए लॉजिकल आंसर मन रखि था. आज्ञा तम लाइफ रे जे कोनसी लाइफ रे जे कोनसी तमे सब दियो एग्जाम दबो ए टाइप रे जोडा डिस्क्रिप्टिव पाठ
ताको जाय लॉजिकल आंसर बुझी पाइला ना नहीं सर लॉजिकल आंसर रिक्वायर्ड पॉइंट्स identification in the answer script so that one candidate can secure very good marks भितर तमे जहा लिखिले ग्रामेटिकल एरर अन्य प्रॉब्लम इज एक्सक्यूज बुझी पाइला ना नहीं पॉइंट ऊपर विशेष जोडा का इलाबोरेट आंसर गडा को जेते हमें सिविल सर्विस परीक्षा दोजंती आईएस हो एस हो सेगडा सब लॉजिकल आंसर दिया जाए सिविल सर्विस परीक्षा मान आगे जानि थियो प्राय समस्त जानि थियो आगे लॉजिकल आंसर कारण मु लाइफ रे देकी आछि आगे जे खूब कम मार्क रो अवश्य एपट सपट हे गला छाड़ ए माने खाली पॉइंट ऊपर फोकस करिवो पॉइंट ता भीतर जहा लिखले भी नो प्रॉब्लम आगे सेगडा प्राय ध्यान दिया जाय ना इवैल्यूएशन समय रे पॉइंट ऊपर के केते आइडेंटिफाई कर एग्जैक्ट पॉइंट टू दी पॉइंट क्वेश्चन जा पचारि छी पैराग्राफ कर जेते जे इलाबोरेट आंसर जे जेते अधिका लिखला सेते से मार्क पाइला आगे एटा टेक्निक आगे सो एंटरप्रेन्योर गोटे सब्जेक्ट ऊपर जे जा परिबो गुडाई लिखि दे परिबो नो प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर हां take bold step risk responsibility for the business and he is one of the innovator short question pola what in by innovation is one of the commercial term applicable in business trading activities and innovation is one of the term as propounded by J. Schumpeter one of the great entrepreneurial theorists the innovation term tiku J. Schumpeter taku propound करिथिले and giving the idea to the businessman, to the traders, to the industrialists, to the commercial people. So how they will apply the innovative thought, nuwa nuwa chinta dhara. eta hochi invention noe invention hochi goda udbhavan kuwa jaye ओडिया रे एग्जैक्ट टर्म ओडा नुवा वस्तु बा द्रव्य बाहरी करिबा जे भली फॉर एग्जांपल टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन मिसी गले वाटर हे गला जल हला ओडा नुवा द्रव्य नहीं कि सेटा हला उद्भावन किंतु सेठी इनोवेशन जदी इनोवेशन पडिला इनोवेशन टर्म रे मध्ये यूज करिवो मन रखिताओ कारण प्रोनाउंसिएशन लाइक सिमिलर so that is why you must use the term invention and make differentiation then clarify clearly it so innovation is one of the commercial or trading term used in business activities only कोठी हमें नुवा बाजार खोजी की पाइबा जने एंटरप्रेन्योर कोठी भलो ट्रांसपोर्ट सुविधा अछि को अंचल रे भलो लेबर अवेलेबल होउची सस्ता रे कोठी कंचा माल अवेलेबल होउची मु जदी एठी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करबी ताले एथारे बा नियर बाय अंचल रे हेवी डिमांड अछि कि ना नाही मो प्रोडक्ट ऊपर हां whether I will maximize the sales or not जदी एगडा सब अछि that we can treat as the innovative idea जदी एंटरप्रेन्योर हैला तो जे कोनसी माने एंटरप्राइज एक्टिविटी करो प्रोडक्शन करो निश्चित भाव रे केतटा जिंस पर आईडिया देले ग्रो हो जिवो आजिकली जो इंडिया रे तो बाहरु आसिक पुनी एस्टैब्लिश करिकी एमएनसी माने एक्सपांड करि दोचन बिजनेस आमे कहीं कि आमे निज अंचल रे प्रोडक्शन करि न परिबा स्कैटर्ड स्मॉल एंटरप्राइज कहीं एस्टैब्लिश न करि परिबा द फैमिली मेंबर्स विल ऑटोमेटिकली engage and earn income per capita income will automatically grow so family total income will automatically increase it will focus on the small scale enterprise आजिकल हमर सौथ लगा अंगंडा रे काई कोठी आ मोर